हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 6 सितंबर 2023 को वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। और आज के पेपर में देयर आर टू मच ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड द न्यूज़ व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड। और बहुत सारी न्यूज़ है इसमें जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जिन न्यूज़ का आपको बेसिक्स कवर करना पड़ेगा, पहले आपको स्टैटिक कवर करना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा कि जो करंट अफेयर्स है उसके साथ हम न्यूज़ को कैसे लिंक करें। परफेक्शन आईएएस आपके लिए यूपीएससी और बीपीएससी के बहुत ही अच्छे कोर्सेज लेके आया है। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस फॉर योर फंडामेंटल्स एंड फॉर द बेसिक फाउंडेशन कोर्स, so we are available, our counselors are available on these numbers, you can contact us. And you'll also see that in this news discussion we do discuss the UPSC PYQs, whether that is of prelims and mains, and our entire discussion of editorials is focused on two things, that is editorial में से prelims में क्या पूछा जा सकता है और मेंस के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल में से आंसर कैसे बन सकता है, उसमें हम बेसिक्स स्टैटिक कैसे मिक्स कर सकते हैं और कैसे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम करंट अफेयर्स को टच कर सकते हैं और उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग यूपीएससी कोर्सेज इन पटना एंड दिल्ली, बोथ द सेंटर्स। 13 सितंबर को पटना में हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आई वांट यू ऑल टू ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आर सीट्स आर लिमिटेड एंड यू नीड टू रजिस्टर प्रायर दिस डेट। अगर आप इस डेट से पहले रजिस्टर नहीं करते हो तो यू विल नॉट फाइंड अ सीट रिजर्व फॉर योर सेल्फ। इफ यू वांट टू रिजर्व अ सीट फॉर योर सेल्फ, आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और आपको कोर्स में जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना होगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज, एंड दिस न्यूज pertains to which one of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution of a country। अगर आपको याद हो ये 2023 का क्वेश्चन है, बट 2022 में यूपीएससी asked a similar type of question about constitutionalism। constitutionalism and the basic question which was asked in 2022 was, what is the meaning of the word constitutionalism, or what do you mean by constitutionalism? ठीक है, this concept of constitutionalism was discussed in 2005 in the Rameshwar Prasad case in the Supreme Court, and which talked about limited government. That was the basic idea or the basic keyword behind this term constitutionalism. Or similar type of question was asked in UPSC 2023 again. So that is why the significance of UPSC PYQs is important. और ऐसे ही हम इंटरलिंक करते हैं क्वेश्चंस को भी और बेसिक सिलेबस को भी। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर to the explanation part. So constitutionalism means limited government, and the main objective of the constitution is to provide a framework for the governance. ठीक है, and this framework for government by deciding the nature and the form of government, as constitution is the basic fundamental law of the land. This statement is entirely, if you see, this is ditto written on the NCRTs, and the functions of the constitution are mentioned in NCRT of 11th class। अगर आप देखो तो आपको वहां पे ये सेम एज इट इज मिल जाएगा, दैट इट डिफाइंस द लिमिट्स एंड डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगा दैट इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज क्वाइट बेसिक इन नेचर। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, सो मूविंग फर्दर टू द फर्स्ट न्यूज, एंड दिस न्यूज सर्कुलेटेड yesterday on the social media platforms। बहुत जगहों पे लोगों ने स्टेटस लगाया दैट इंडिया इज नो लॉन्गर इंडिया, इट्स नाउ भारत, India has been replaced by Bharat, India word is no more in constitution, constitution is going to amend, and all of that. But yes, we need to understand this thing that India and Bharat, there has been a debate on these two names. ठीक है, and this debate as per legal experts
and the interchange of the words India and Bharat is quite legal in nature as per the legal experts. ठीक है, तो इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है कि आप इंडिया यूज करो, गवर्नमेंट भारत यूज करे, या इंडिया कोई इंडिया बुलाए या भारत बुलाए, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज भारत. ठीक है. So basically, this controversy and this issue raised because of the invitation letters mentioning Bharat, the invitation to all the heads of the states and governments which are attending the G20 summit was sent by our honorable president द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्होंने जो इनविटेशन लेटर पे लिखा था दैट वाज भारत. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द इनविटेशन कार्ड्स सेड प्रेसिडेंट ऑफ भारत. ठीक है. So that's why this was held, and now let's have a bit more detailed analysis of this issue, that why is this issue there. So the debate over replacing India with Bharat in the official communication sparks this controversy, and in this recent shift this was the main point, that is the president of Bharat, which was used by President Draupadi Murmu ji. ठीक है. तो अब इसमें इशू क्या है. तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, यूजुअली भारत was not more frequently used in the official communications earlier, but yes, recently it has been so. However, the opposition has raised concerns over this, as the India bloc has raised concerns over this. But अगर आप देखो तो legal experts का ये view है that these two words can be used interchangeably, and there is no such problem in interchanging or using the words Bharat or India, uh, replacing each other or interchangeable use of these words. It's totally fine because constitution mentions both of the names, है ना. तो earlier in 2016 and 2020 there were two cases which were decided by Justice T.S. Thakur and Justice S.A. Bobde, which pointed out that both the names are mentioned in constitution, and it's the right of the individual to choose between Bharat and India. So the Constituent Assembly earlier also had debated this thing about the various names of the country, with India primarily included for international organizations. ठीक है. So that's all the controversy about it. Don't get into the fake news or don't get into the social media conversations. है ना. We need to adhere to the basics. That is the Article 1, which mentions that India, that is Bharat, है ना. India, that is Bharat, shall be a union of states, and this deals with two things, that is the name of the country, है ना, and the type of the polity, and this polity will be federal in nature. That is, the states, that all the states and territories must be specified within the first schedule of the constitution is mentioned in this Article 1 clause 2, and the territory of India must comprise of, what does this territory of India comprise of? First is the territories of India, that is union territories, and the states, the constituent parts of the country, and the indestructible nature of the states is also highlighted by this article. ठीक है. Because this structure of governance provides for multi-ethnic and multicultural population and their representation and the wide expression of the territory of India, and wider than the expression of Union of India. ठीक है. Because territory of India usually exemplifies the union territories and states both. ठीक है. So yes, let's move to the next news. And this news, this editorial talks about the infrastructural development and the development in Himalayan region, uh, and the nits and grits of this developmental process which has been followed in the recent past. or last month जब एक Chief Justice of India, Honorable D.Y. Chandrachud, had suggested that an expert committee will conduct a complete and comprehensive study on the carrying capacity of the Himalayan region. Because अगर आप देखो तो अभी हमने पिछले हफ्ते एक झाड़धाम प्रोजेक्ट, है ना, चारधाम प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था, एंड इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ग्लेशियर मेल्टिंग या लैंडस्लाइड्स, या अगर आप देखो तो अराउंड 12,000 करोड़ का is the financial loss of the Himalayan state only, है ना. The one state has suffered this much of loss, and we have lost around more than 300 people in the recent floods from the Himachal state only.
तो दैट इज द पॉइंट, एंड उत्तराखंड हैज आल्सो सफर्ड अ लॉट। और अगर आपको याद हो तो जोशीमठ का एक्सपीरियंस वी हैव स्टिल इन आवर आईज, दैट how much havoc and chaos was created at that time when Joshimath was sinking, and the basis behind it is the increasing human load and human footprint on this region, ठीक है, on the Himalayan region। और अगर आपको याद हो तो अभी when the summer heat of Delhi and the plains pushed all the population from here, all the youngsters from here, to go and have some sight of relief in the hills। और फिर उस टाइम पे हमने देखा दैट शिमला के मार्केट्स, शिमला की रोड, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा हाईवे ट्रैफिक जैम से बंद पड़ा था, और इतना ज्यादा ह्यूमन फुटप्रिंट या इतना ज्यादा क्या जो है ह्यूमंस का, यू कॉल इट टूरिज्म और यू कॉल इट इनफ्लो, दिस हैज इंक्रीज्ड। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, ह्यूमन लोड बढ़ जाता है। that area is tectonically sensitive, and that area is tectonically active, and that has very fragile, if you see the crust and the glacial remains which are there, the basic crust which is there is the glacial remains, if you see there, those are moraine deposits, है ना, most of the in the most of the areas। so that is where the increased human load and increased human capacity causes the problems, and these problems were highlighted in the case which was there adjudged by Justice D.Y. Chandrachud. And these past failures, if you talk about the 2013 Uttarakhand floods and some other issues in the recent floods which have been highlighted, तो इसमें there were recently guidelines in 2020 uh, for assessing the carrying capacity in the hill stations, and then declaring the cities and eco-sensitive zones, and these guidelines were circulated for the entire 13 Himalayan states. So now the Ministry of Environment has undertaken deep studies on this, and if you see the recent environmental crisis, as we have been highlighting this thing, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो these are some issues जो डेवलपमेंटल इश्यूज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर आप देखो तो जो चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, तो चारधाम प्रोजेक्ट में भी द इशू हैज बीन दैट कि दिस इज अ 900 किलोमीटर, है ना, वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड, दिस रोड जो हमें बनानी है, ठीक है, डबल लेन। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि ये 900 किलोमीटर्स का जो एरिया है या जो रोड है जो बन रही है, जो डबल लेन रोड है, दैट हैज नॉट गॉन थ्रू एक्सटेंसिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो ये नहीं हुआ है इस पे। और क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज देर आर सम लीगल इश्यूज एंड वायलेशंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो इन मल्टीपल cases earlier. So this development versus environmental sustainability is a challenge when we talk about the Himalayan states and the development of Himalayan states, and that is what has been highlighted in this editorial. So moving further to the Africa, ठीक है। तो अफ्रीका में इफ यू सी नाइजर, गबन, सूडान, माली, बुर्किनो फासो एंड गिनी, दीज आर सच कंट्रीज जहां पे रिसेंटली कूप, इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, है ना, ये सब चीजें हमें देखने को मिली है पास्ट में। और द रिसेंट मोस्ट इज द कूप इन गबन, ठीक है। अब गबन में कूप हुआ है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गबन कहाँ पे है, ठीक है। गबन के आसपास कौन सा आइलैंड है, गल्फ ऑफ गिनी कहाँ पे है, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी में कौन से दो प्राइम मेरिडियन, और कौन से दो प्राइम मेरिडियन किसके साथ इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे कौन सा प्राइम लैटिट्यूड है यहाँ पे जिसके साथ वो इंटरसेक्ट करता है, प्लस विच इज द नियरेस्ट आइलैंड देयर, है ना। तो जो हम पिछले एक बार डिस्कशन में कर चुके हैं, गबन में जब कूप हुआ था, तो गबन के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था उस टाइम पे। नाउ एट प्रेजेंट वी विल मोर बी डिस्कसिंग ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द चेंजिंग सिनारियो ड्यू टू दी चेंजिंग अफ्रीका, ठीक है। और अफ्रीका में पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो सो what is the generational shift in the leadership is that the new leadership is more risk taking, and they want what, a shift from the global geopolitical dynamics. And global geopolitical dynamics, if you see, it's changing because now these countries जो पहले फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, है ना, these coups
signal this thing that we will shift from the Western or the uh, colonial hegemony towards our own independent structures. Okay, and that's where they want to challenge this thing. And if you see that all the colonial countries which got independence have been मार्क्ड विद दिस फेनोमेना कि जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज इससे पहले थी उनमें एक चीज कॉमन है, दैट इज द नेचर ऑफ लॉ ब्रेकिंग एंड द टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ, टू ब्रेक द structures of the government. Why? Because the independence which they have received or which they have brought to themselves is only because of the nature of the revolts and the revolutions they have gone through. ठीक है, और डेमोक्रेसी के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो हुआ, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ a new kind of ideology and new kind of discourse, and that discourse set a new way for these colonial countries. And that's what makes them fragile when they feel, अब कभी भी इन कंट्रीज में जब भी ऐसा होता है दैट द गवर्नमेंट, है ना, is behaving like a colonial power, these countries will revolt. And what's revolt in terms of Aristotle? He says that a minor change is a revolt. Okay? So that's where you need to understand this thing, that why don't they accept these changes and why are these countries so much fragile in nature, is the basic reason behind the struggle, is the basic reason behind the ideology, and that basic reason is the shift from the colonial structures to the independent structures. So emerging global players now in Africa are Russia, and Russia's influence in Mali and Burkina Faso following the coups, while China has replaced France as Gabon's मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर. तो नए जो कंट्रीज आ रही है, नए जो इनके पार्टनर्स आ रहे हैं अभी कॉलोनियल कंट्रीज को हटा के, तो दैट टू इज कॉजिंग सम मोर थ्रस्ट टुवर्ड्स दीज कूप्स. ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि जितना भी कॉलोनियल डोमिनेंस था वहां पे, उसको रिप्लेस करने के लिए चाइना एंड रशिया आर इंटरवीनिंग एंड दे आर चेंजिंग द ग्लोबल जियो डायनामिक्स एंड द जियो डायनामिक्स ऑफ पर्टिकुलरली दीज कंट्रीज where they are investing more, है ना. And why are countries more attracted towards these regions is because of their resource rich in nature, है ना. तो western influence is declining because of the limited impact, and this diminishing western influence in the African countries is the cause of these coups. So let's move to the next editorial, and this editorial talks about the implications of the expansion of BRICS. अगर आपको याद हो तो अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ था, 15th ब्रिक्स समिट 24 अगस्त को जो जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका, जिसमें 5 मेंबर्स गए थे और हमने 6 और मेंबर्स को अडॉप्ट किया और एक्सेप्ट किया, और ब्रिक्स को अब 11 मेंबर्स की टीम बताते हैं, और 11 मेंबर्स हमारे पास टोटल हो गए, जबकि हमारे पास ब्रिक्स में 40 एप्लीकेशंस आए थे. 40 में से 22 कंट्रीज ने फॉर्मल एप्लीकेशन दिया था और उसमें से ओनली 6 वेर एडमिटेड इनटू ब्रिक्स. नाउ द फॉर्मर एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएई, मिस्टर तलमीज अहमद, he highlights the dimensions and the integrity and the nits and the grits of this expansion of BRICS. So what he highlights is that BRICS acting as a front, united front against the Western dominance, because the Western dominated institutions have repelled, or they have uh, time and again time and again dissatisfied the Eastern countries, because World Bank हो, IMF हो, UN Security Council हो, the basic flaws like veto power, है ना, IMF में कॉन्ट्रीब्यूशंस, वहां से लोन, और वहां से जो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आती है लोन के साथ साथ, है ना, वहां से जो बेल आउट पैकेज आता है ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, तो दोज कंडीशंस हैव डिससैटिस्फाइड द ईस्टर्न नेशंस and the promotion of cooperation, because now the geopolitics is changing, so India and China and all the other nations around the world
who are gaining power, whether technologically or economically, they are now focusing more on regionalization of politics, regionalization of international relations. ठीक है, and this regionalization and the multipolar world order, ठीक है, this multipolar world order demands the creation of multiple poles and multiple organizations so that you have bargaining power into these. Then the promotion of cooperation also has significant, uh, if you see the establishment of institutions, है ना, तो जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक द ब्रेटन वुड्स और इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, तो उसी के जैसे अब अगर आप देखो तो दी कंट्रीज विल आल्सो एस्टैब्लिश सेम टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच विल बी नॉन वेस्टर्न डोमिनेटेड, लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक, लाइक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, एंड द डिमांड फॉर द रिफॉर्म्स इन यूएनएससी, है ना, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अब अगर यहाँ पे हमें रिफॉर्म्स चाहिए तो वी नीड सम बार्गेनिंग पावर, एंड दैट बार्गेनिंग पावर विल बी gained, or that bargaining power will be increased by the development of these type of institutions। चाहे वो ब्रिक्स हो, वो आसियान हो, वो सार्क को ओवर पावर करना हो, वो सार्क को ओवर पावर देना हो, वो सार्क को ओवर पावरफुल बनाना हो, वो ब्रिक्स को पावरफुल बनाना हो, तो these are the institutions which will stand for us, and these are the institutions from where we can collate and collect the bargaining power against the reforms, for the reforms of the international institutions which are termed as post second world war institutions। then moving further, what's the impact of this BRICS expansion? अब ब्रिक्स एक्सपैंड हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या है? सो फर्स्ट इम्पैक्ट इज द डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक पावर विच विल नाउ बी स्ट्रेंथन्ड। अब डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक पावर हमारा बढ़ गया। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से ब्रिक्स अभी अगर आप देखो तो दिस रिप्रेजेंट्स अराउंड 46% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन नाउ, एंड होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी विच सरपासेस द G7 नेशंस, है ना। तो दैट इज द इम्पैक्ट, दैट इज द ग्रेविटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन नाउ एट द इंटरनेशनल लेवल। देन एनर्जी सेक्टर डोमिनेंस, तो ब्रिक्स नेशंस या ब्रिक्स कंट्रीज जो है, दे आर द ओनली ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज विद द मेजर शेयर इन द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, अराउंड 42% शेयर, 50% के आसपास शेयर है, 42% के आसपास शेयर है किसका? ब्रिक्स नेशंस का। 42% शेयर होल्ड्स इन इटसेल्फ एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप ओपेक और ओपेक प्लस देखो तो दैट इज द बिगेस्ट कार्टेल, है ना, और वहां से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर हेयर नाउ। देन जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, so new members like West Asia and Africa add significant geostrategic value to the BRICS। then consensus declaration, despite internal differences, they issued a consensual declaration at the earlier summits or at their summits, and they expanded the area of interest of BRICS also, which includes centrality of United Nations, conflicts in West Asia, Ukraine crisis, and there are shared views about these political issues now among the BRICS countries, and that shows the international consensus when there is a lack of international governance। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज। ठीक है, देन कमिंग टू द आउटलुक फॉर रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। so what BRICS as an organization thinks about the global affairs and the regional affairs, अगर आप देखो तो सऊदी यूएई का जो इशू है, both countries have now pursued independent foreign policies engaging with the regional actors there। ईरान का जो रोल है, ईरान एंट्री इनटू ब्रिक्स represents opportunities for regional economic cooperation। ठीक है, even after facing multiple sanctions from the west। then multipolar world order, yes, as I said earlier also कि multipolar world order के लिए these are the basis of raising the voice, these are the basics of the platforms from where the global powers can arise, है ना। that's how we can call the 21st century Indian century or 21st century the Asian century, है ना। तो then BRICS expansion with the inclusion of 6 new members represents a significant shift in the global dynamics। this united front challenges Western dominance in international institutions। ठीक है, तो that's how the entire of this editorial is concluded by Mr. Talmiz Ahmed। ठीक है, चलो।
तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर डिफरेंट। क्यों नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट्स को लॉज अलग से गवर्न करते हैं? क्यों मिजोरम की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द रीसेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023? और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्यों एप्लीकेबल नहीं है नागालैंड पे? व्हाई आर देयर स्पेशल प्रोविजंस व्हेन वी टॉक अबाउट नागालैंड एंड मिजोरम? क्यों है ऐसा? और क्या क्या चीजें हैं? दीज निट्स एंड ग्रिट्स वी विल गो थ्रू। और अगर आप इस एडिटोरियल की समरी देखो तो ये एडिटोरियल एक्सप्लेनर सेक्शन में आया था और पूरे पेज पे एक एडिटोरियल आया था। जिस पेज पे बस दो एडिटोरियल्स आते थे, उस पे आज पूरे पेज पे एक ही एडिटोरियल आया। तो ऑन अगस्त 22, मिजोरम असेंबली यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन अपोजिंग द 100 किलोमीटर का जो ये 100 किलोमीटर का जो एक एक्सेप्शन है इन दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 अमेंडमेंट। तो उसमें उस सेक्शन को अपोज करने के लिए दे passed a resolution. Then the special constitutional protections under Article 371 for Nagaland and 371G for Mizoram are there, which prohibit the application of any law enacted by the Parliament that impinges on Naga and Mizo customary laws and procedures. और नागास के customary laws है there, and what was the judgment in the गोदा वर्मन केस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, ये हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, पूरे का पूरा लॉ। और यही द हिंदू एनालिसिस में हमने पूरा लॉ डिस्कस किया था। पहले हमने बिल डिस्कस किया, उसके बाद जब ये एक्ट बना तब एक्ट डिस्कस किया, और इसके सारे प्रोविजंस भी हमने डिस्कस किए कि कहाँ पे इसके एक्सेप्शंस है। 100 किलोमीटर बॉर्डर एरियाज में जो ये एक्सेप्शन देता है, एग्जाम्पशन देता है फॉर बॉर्डर प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए भी जितने भी उसके नेट्स एंड ग्रेड्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एडिटोरियल। दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 परमिट्स द फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन। और फॉरेस्ट लैंड को अगर हमें डाइवर्ट करना है तो उसको परमिट करता है फॉर व्हाट? विद इन द 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का जहां पे भी है, वहां पे अगर 100 किलोमीटर के लिए अगर आपको जंगल में कोई काम करना है तो यू कैन डाइवर्ट दैट लैंड फॉर सर्टन प्रोजेक्ट्स लाइक सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, आर्मी का कोई प्रोजेक्ट हो, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, है ना, कोई रोड बनानी हो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, वहां की मोबिलिटी के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो एट दैट पॉइंट दिस एक्ट एग्जेम्प्ट्स 100 किलोमीटर्स ऑफ द लैंड देयर। ठीक है। और इसी डिस्कशन के चलते द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, दिस हैज स्पार्क्ड इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड हैव अपोज्ड दिस 100 किलोमीटर एग्जाम्पशन। और ये एग्जाम्पशन को अपोज करने के बाद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट कि क्या एक्चुअल में और कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। तो देर आर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस अंडर आर्टिकल 371A एंड 371G विच प्रोवाइड दैट जो ये स्टेट्स हैं नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं लगेगा पार्लियामेंट का उस हद तक जहां तक कस्टमरी लॉज एंड लैंड ओनरशिप की बात आए, तो या फिर ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर रिसोर्सेज की बात आए, तो वहां पे पार्लियामेंट का लॉ नहीं लगेगा बट उनके कस्टमरी लॉज लगेंगे। सच लॉ कैन ओनली अप्लाई इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस रेजोल्यूशन फॉर दैट लॉ टू अप्लाई ऑन दैट पार्ट। सो दैट इज वाई नागालैंड का जो एप्लीकेशन है ऑफ दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में, नागालैंड पास्ट द रेजोल्यूशन, नागालैंड की असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन, तब जाके ये लॉ लगा। सिमिलरली मिजोरम में जब ये लॉ लगाना था तो 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1986 में टू मेक द लॉज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज एप्लीकेबल इन मिजोरम। डन। अब अभी का जो लॉ है तो वो भी वहां एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक जब तक वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो रेजोल्यूशन पास ना करे। Then, what is the forest land classification and what is this recorded forest area? अगर आप देखो तो दिस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मींस दैट एरिया जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है। बट अगर आप देखो तो गोदा वर्मन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था विच टॉक्ड अबाउट दैट लैंड जो रजिस्टर नहीं है एज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट,
but that land is actually similar, or if you talk about the dictionary meaning of forest, so that land with such that patch of land with such density of plants can be categorized as forest and should be treated as forest when it comes to the protection of that patch of land. This was said by Supreme Court in 1996 Godavarman case. ठीक है, तो this forest land shall be considered as that land which is under the dictionary meaning of forest. So then protecting the forests and indigenous rights in northeast, this diversion of forest land, this includes the ensuring the forest rights, the recorded forest area compliance, the forest rights acts or the forest rights. The state governments can mandate compliance with the FRA before approving the forest diversion proposals, and this includes the ग्राम सभा's consent also. तो वहां की ग्राम सभा का consent होगा तभी divert होगा वहां का land. और वैसे ही legal measures which mandate that FRA fulfillment should be there before recommending the forest diversion, and this should be secured from the Gram Sabha consent only for the land handover. और वैसे ही we have the role of Ministry of Tribal Affairs also there, or Ministry of Tribal Affairs can issue enforceable directions under FRA Forest Rights Act to enact separate legislations to recognize and settle the forests, to recognize and settle the forests issues, and to settle the forest rights when the forests are diverted for other purposes. ठीक है, so these are the mechanisms for ensuring protection of forest rights in the northeast. ठीक है, so while concluding this act or this question, and while concluding this editorial, the author here highlights that we need to balance forest conservations not only with the development but also with the indigenous rights in India's northeast. And this is a complex task for which we need a multi stakeholder approach, and we need a protection and compliance of FRA, seek the Gram Sabha's consent, and for any land diversion and for any legal measures. Done. So that's all for this editorial. Aditya L1 का एक पेलोड इस ट्रैक विल चेंज द ट्रेजेक्टरी नाउ. और अगर आप देखो तो द मैन्योर वाज परफॉर्म्ड अर्लियर दिस ट्यूसडे, और उसके बाद द न्यू ऑर्बिट अटेन्ड वाज 282 किलोमीटर्स. एंड दिस ऑर्बिट जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस फोटोग्राफ में, ठीक है, दैट इज द शिफ्ट ऑफ द ऑर्बिट्स, है ना. तो ये अभी होता रहेगा जब तक ये इंजेक्ट नहीं हो जाता किसमें, ऑर्बिट में, विच द ऑर्बिट विच हैलो ऑर्बिट अराउंड द पॉइंट L1. ठीक है, तो L1 पॉइंट विच इज द लैग्रेंजियन पॉइंट. ठीक है, अगर आपको अभी भी आदित्य L1 के बारे में कुछ नहीं पता है तो कल का डिस्कशन और परसों का डिस्कशन इज देयर विच इज स्टिल ऑन दिस यूट्यूब चैनल, जो आप देख सकते हो. तो वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ L1, we started with the basics of Aditya, we discussed all the 7 payloads of it, उनका function, उनका objective, L1 का orbit और L1 के orbit की क्या एडिशनल बेनिफिट्स है और क्यों L1 ऑर्बिट इतना ज्यादा प्रेफर्ड है. तो हर एक चीज हमने उस डिस्कशन में डिस्कस कर ली है, तो यू कैन रेफर टू दैट. देन मूविंग फर्दर टू दिस इशू which was highlighted by our finance minister Miss Nirmala Sitharaman ji at the Global FinTech Fest GFF 2023. और जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कुछ इश्यूज हाईलाइट किए, issues of cyber security, issues of cryptocurrencies, and issue of drug war and mafias, tax havens, and the tax evasion. And she said that yes, these are the threats, है ना, and India as the president of G20 is handling and performing for the frameworks of these issues. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे लिए जो हम नोट डाउन कर सकते हैं और हम अपने आंसर्स में कल को यूज कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी डायमेंशंस एंड द रोल ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो मूविंग फर्दर,
The August services and PMI shows a momentum, and this momentum is sustaining the tad slower. और PMI क्या है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. तो अगर आप देखो तो दिस इंडेक्स इज बीइंग रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज, एंड दिस इंडेक्स हैज शोड दैट सर्विस सेक्टर का जो आउटपुट है उसमें जितना ग्रोथ आया है वो ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट जुलाई. 62.3% लास्ट जुलाई में था, जो 13 साल में सबसे ऊंचा था, एंड नाउ it has come down to 60.1%. That is the growth in the service sector in India. And अब अगर सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कम हुई है तो इससे हमें क्या मिलता है और क्या हमारे की पॉइंट्स होंगे यहाँ से? दैट इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, है ना, रिमेन्ड इन अगस्त एंड फर्म्स रेज्ड प्राइसेस एट द फास्टेस्ट रेट. व्हाई? बिकॉज इफ यू सी दैट दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है. द अदर पॉइंट इज दैट दिस 13-year हाई, this despite this slight decrease from 60% to 62.3% to 60.1%, new export orders have been experienced, and the fastest growth in the last in the least in at least 9 years has been witnessed. ठीक है, इन अगस्त. और ग्रोथ के परस्पेक्टिव में अगर आप देखो तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द इंडियन मार्केट एंड देर इज अ हायरिंग सर्ज, और कंपनीज यहाँ पे इंडिया में अभी हायर कर रही है स्टाफ को. तो दैट इज शोइंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, which will boost up the businesses, and the service business may reach highest levels in 2023, and this will further help us in the export growth. And the international demand has supported one of the best sales performances recorded over last 13 years, driven by the fresh contracts from customers in Asia Pacific, Europe, North America and Middle East. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे वो चीजें हाईलाइट की गई है which are the positive aspects of the growth and which are the positive aspects of the Indian economy, which set up a positive sentiment in the business and market, और जिसकी वजह से the growth will be driven, the economy will be more growth driven. So at last we have this question from UPSC Mains 2022 GS 3 का ये क्वेश्चन है. ठीक है, अगेन दिस इज GS थर्ड क्वेश्चन, और this question talked about and asked that do you think or is inclusive growth possible under the market economy? Do you think that inclusive growth is possible when we talk about market economy? What is market economy and what is market dominated or what is free market economy? You should be knowing this thing. ठीक है, और एडम स्मिथ क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, और ये बेसिक इकोनॉमिक्स है जो यहाँ पे पूछी गई है इस क्वेश्चन में. ठीक है, दिस इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज वेयर फ्रॉम द इकोनॉमी स्टार्ट्स, दैट्स वेयर फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स स्टार्ट, कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी. Then this question further asks you about that. State the significance of financial inclusion. कि कितना important है financial inclusion in achieving economic growth in India. Why is this question mixing up two different dimensions? One is inclusive growth and then is financial inclusion. ठीक है, one is inclusive growth and another is financial inclusion. So there are two things, growth and फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो दो जगहों पे हमें इंक्लूजन करना है, एक तो ग्रोथ में भी इंक्लूजन करना है और दूसरा फाइनेंसेस में भी इंक्लूजन करना है. सो दिस रिप्रेजेंट्स अ निश और यू कैन से एन इकोटोन बिटवीन द ग्रोथ एंड फाइनेंसेस, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक पैसा बैंक्स से बाहर पड़ा हुआ है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाहर पड़ा हुआ है, तब तक वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, और इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा तो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ अगर होगा भी तो बहुत स्लो ग्रोथ होगा, जैसे हम बोलते थे हिंदू ग्रोथ रेट, है ना, अर्लियर. तो दैट इज वाई आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए. ठीक है, इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन बट यू नीड इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां पे ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों साथ साथ में चले.
and that is where we will answer this question. We will first define what's inclusive growth, we will link it to market economics, and then we will also link it to the financial inclusion. That is why this market economics and why this inclusive growth needs financial inclusion. ठीक है, और इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आप देखो तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमृत काल विजन इन 2023-2024 बजट। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको हाईलाइट करने होंगे इसमें। आर्टिकल 38, पॉवर्टी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल इंडिया मिशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट inclusive growth. That is where we should work for the inclusive growth. And then what are the key dimensions and key schemes which we have promoted for financial inclusion, क्योंकि financial inclusion ही promote करेगा inclusive growth को। ठीक है, that is how we will grow and that's how India will grow, and that's how we will conclude this question. Because the market economy, despite being economically efficient, है ना, is not the ideal system, but yes, this is the most practicable system which we can talk about at this moment, है ना। ऐसे ही जैसे एरिस्टोटल बोलते हैं that democracy is the best practicable form at present, है ना। तो until we find a solution to that, है ना, to the vices of the democracy. So that's how we will conclude this question, and that's how we write the answers in यूपीएससी। और ऐसे ही हम एडिटोरियल एनालिसिस भी करते हैं। और अगर आप ये नोट्स देखो, वापस पीपीटी देखो, तो आपको ये पीपीटी मिल जाएगी हमारे चैनल्स पे, हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो जस्ट कनेक्ट टू आर दी टीम, ठीक है, जो आपको पीपीटी प्रोवाइड करेंगे। 9031036712 इज आर मेन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पीपीटी चाहिए या कुछ और चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, मेंटोरशिप से रिलेटेड हेल्प चाहिए, या आपको कोर्सेज के बारे में पता करना है जो हमारे अपकमिंग कोर्सेज है फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी, तो यू कैन गेट इन टच विद अस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।